श्री वैष्णवेभ्यो महाभागवतेभ्यो नमः नमस्कारं कुर्यात् स्वामिनः अशेषे हे परिषद भवत्पादमूले मया समर्पिताम् इमां संवर्णीं दक्षिणां यत्किञ्चिदपि यथोक्तदक्षिणां स्वीकृत्य अत्र भविष्टानाम् एतेषां भगवद्भागवताचार्याणां सन्निधौ विद्यापरं मया क्रियते क्रियमाणं विद्यापरमवधानेन श्रूयतः अस्य श्री भगवतो देवदेवोत्तमस्य श्रीमद्यादरोणि ब्रह्माण्डनायकस्य देवदेवस्य जगद्गुरुमिनः जगद्रक्षणार्थम् अवतीर्णस्य अग्रहेय प्रत्यनीक कल्याणगुणैकदानस्य अपारकारुण्यसौशील्यवात्सल्य औदार्य ऐश्वर्य सौन्दर्य महोदधेः जगद्गुरुमिनः जगद्रक्षणार्थम् अवतीर्णस्य अयं भगवान् श्रीमलखिलमहीमण्डलमण्डलधरणीधरमण्डलाखण्डलस्य क्षेत्रविभूषणस्य शेषाचल सिंहाचल वृषभाचल नारायणाचलाञ्जनाचलादि शिखरिमालाकुलस्य नाथमुखबोधनिधि गुणसाभरणसत्त्वनिधि तत्त्वनिधि भक्तिगुणपूर्ण श्रीशैलपूर्णविभ्रमतुङ्गशृङ्गालिङ्गिनस्य भक्तसंरक्षणार्थमवतीर्णस्य कृते नारसिंहस्वरूपस्य त्रेतायां रघुनन्दनस्वरूपस्य द्वापरे वासुदेवस्वरूपस्य कलौ श्रीवेङ्कटनायकस्य स्वस्ति समस्तदेवगणमौलिरत्नकिरीटदिव्यप्रभामण्डलविराजित निजपादयुगणस्य नूपुरपीताम्बर श्रीवत्सकौस्तुभ केयूरहार मकरकुण्डलमण्डितस्य सुदर्शन पाञ्चजन्यकदा पद्माङ्कित करशोभितस्य कनककमलगल्हारतुलसीकूकपुन्नाग मालालङ्कृतस्य लक्ष्मी मनोहर वक्षस्थलस्य भोगेन्द्रभोगशयनस्य श्रीमद्खिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य लक्ष्मीनारायणस्वामिनः कल्याणमहोत्सवकर्मकर्तुं मम योग्यता सिद्धिरस्मित्यनुगृह्णन्तु भवन्तः योग्यता सिद्धिरस्तु विश्वक्सेनाराधनं प्रभुवि ब्रह्मग्रन्थिपर्यन्तं तन्मध्येतत्क्रियाकलापाः निर्विघ्नाः निर्वद्विघ्नात् भूयासुरजोक्तो महान्तो न गृह्णन्तो तथास्तु इति विज्ञाप्याः नमस्कृत्याः स्वासने उपविश्य ओम देवीं वाचमजनेन्द्रदेवास्तां विश्वरूपात्मजो वदन्ते तानो मन्त्रे नमोच्चन्द्रहादाने सर्वागस्तान् वदन्तो अयं मुहूर्तस्मोऽस्तु ब्रह्मादीनां गुरुपूर्वविद्युराघवेदिनं पाचरात्रप्रवक्ता वन्दे नारायण प्रभुं विश्वक्सेनं ददातार्कं वरद्वाजकपिञ्जरम् इष्टादिमनीं वन्दे पाचरात्रप्रवक्तकारां वरदं विष्णुं द्विजवर्णं चतुर्भुजं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते यज्ञवक्त्राद्याः पारसद्याः परस्थितं निगजं विश्वक्सेनं तमाश्रये तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदे विश्वदामि यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाममङ्गलम् यावस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः यावदापहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः श्रीसीतारामाभ्यां नमः श्री
श्री श्रीवासवरब्रह्मणे नमः श्रीमदन्तगरुडविष्णुभक्तेन भक्तपरिवारेभ्यो नमः चण्डादिद्वारपालकेभ्यो नमः केशवादिचतुर्विंशतिमूर्तिभ्यो नमः परांशपरकालयापरैतिवरादि पूर्वाचार्येभ्यो नमः सर्वेभ्यः श्रीवैष्णवेभ्यो महाभागवतेभ्यो नमः नमस्कारं कुर्यात् यजमानस्य आचमनं कृत्वा ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगरोऽपि वा स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं तवाभ्याभ्यन्तरस्वचिः पुण्डरीकाक्षाय नमः आचम्य ओम अच्युताय नमः ओम अनन्ताय नमः ओम गोविन्दाय नमः पुनस्तं प्रक्षाल्य ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः ओम गोविन्दाय नमः ओम विष्णवे नमः ओम मधुसूदनाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम वामनाय नमः ओम श्रीधराय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम दामोदराय नमः ओम संकर्षणाय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम प्रद्युम्नाय नमः ओम अनिरुद्धाय नमः ओम पुरुषोत्तमाय नमः अदोक्षराय नमः ओम नारसिंहाय नमः ओम अच्युताय नमः ओम जनार्दनाय नमः ओम वेद्राय नमः ओम हरे नमः ओम श्रीकृष्णाय नमः श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः ओम उत्तिष्ठन्तु भूतपिशाचाः एते भूमिवारकाः एतेषामविरोधेन ब्रह्मकर्मसमारभेत् प्राणानायिन्या ओम भूः ओम भुवः ओम सुवः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम् ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओमापो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्मा भूर्भुवस्सुवरो ओम शुभाभ्युदयार्दन्यजुवेरोपरेवणयमुहूर्ते अत्र पृथिव्यां चम्पाद्वीपे भारतवर्षे भद्रखण्डे शताब्दे वेदोष्णविभागे श्रीरङ्गस्य उत्तरप्रदेशे गङ्गा कावेर्योः मध्यदेशे शोभनस्थले समस्तदेवता भगवद्भागवता आचार्याणां सन्निधौ अस्मिन् वर्तमान व्यावहारिक चान्द्रमानेन प्रभवादि षष्टि संवत्सराणां मध्ये स्वस्ति श्री क्रोधिनाम संवत्सरे उत्तरायणे शिशिरऋतौ माघमासे शुक्लपक्षे अद्य नवम्यां वासरः बृहस्पतिवासरे शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरणे एवं गुण विशेषण विशिष्टाय अस्यां शुभदिनौ अस्य श्री भगवतो देवदेवोत्तमस्य श्रीमद्विराटगौरीब्रह्माण्डनायकस्य देवदेवस्य जगत्कुटुम्बिनः जगद्रक्षणार्थम् अवतीर्णस्य लक्ष्मीनारायणस्वामिनः दिव्यकृपया अस्य भक्तस्य यजमानस्य गोत्रोद्भवस्य शिरांशुगोत्रोद्भवस्य सुरेशचंद्र नारायण दास लड्डा नामधेयस्य धर्मपत्नी समेतायाः जयश्री नामधेयायाः सिद्धि नामधेयायाः सहकुटुम्बानां सपरिवाराणां बोलिए मम क्षेम स्थैर्य धैर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्म अर्थ काम्य मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं आध्यात्मिक आधिदैविक आदिभौतिक तापत्रय निवारणार्थं मनस्संकल्प सिद्ध्यर्थं मम उद्योगे
व्यापारे व्यवहारे व्यवसाये राजद्वारे राजमुखे सर्वदा दिग्विजय प्राप्त्यर्थं मम जारभय चोरभय शत्रुभय अग्निभय धनभय ऋणभय इत्यादि समस्त भय निवारणार्थं मम गंडदोष नागदोष नवग्रहदोष भूदोष स्थलदोष वास्तुदोष शय्यदोष परिहारार्थं मम जन्मनक्षत्र जन्मराशि नामनक्षत्र नामराशि वशात् ये ग्रहाः अरिष्ट स्थानेषु स्थिताः तेषां ग्रहाणाम् अत्यन्त आनुकूल्यता फल सिद्ध्यर्थं इहलोके सुखजीवन योग्यता सिद्ध्यर्थं मम गृहे धन कनक वस्तु वाहन समृद्ध्यर्थं लक्ष्मीनारायण परिपूर्ण अनुग्रह कृपा कटाक्ष सिद्ध्यर्थं मम विवाह वार्षिकोत्सव समये एवं षष्ठीपूर्ति समये लक्ष्मीनारायण स्वामी कल्याण महोत्सवं करिष्ये इति संकल्प्य ओम हिरण्यगर्भः समुवर्तदाग्रे भूतस्य जातकृतरेकासीत् सदा पृथिवीं यावदेवां तस्मै देवाय विशाविधेम एतत् कर्म श्रीपाञ्चरात्रशास्त्र दिव्यागमोक्त प्रकारेण संभवित नियमेन संभवित द्रव्येन यदा ज्ञानतः करिष्यमाणः आदौ सिद्ध्यर्थं मृत्यर्थं अभ्युदयार्थं च एभिः देवैर्महाजनैः सह वासुदेव पुण्याः वाचनं करिष्ये आदौ निर्विघ्नेन प्रसवाञ्चरणं श्री विष्णुसेनाराधनं करिष्ये तदङ्गपात्रासाधनं करिष्ये इति संकल्प्य ओम सन्नो देवेन विष्टाय भवन्तवेदे शम्यानभिस्रावन्दनः अर्घ्यं परिकल्पयामि पाद्यं परिकल्पयामि आचमनीयं परिकल्पयामि स्नानीयं परिकल्पयामि सर्वार्थदोषं परिकल्पयामि तस्मिन् गिरिजानदीप्त्या ओम गिरिजानन्दी नमः आगच्छागच्छागच्छे दीर्घजागरीप्त्या आगतास्तामुद्धिर्या अष्टाक्षर्याभितन्त्रया अर्घ्यादिमात्रेषु किञ्चित् जलं निक्षिप्य जलचरेण गङ्गाधव्यायात्मानश्च प्रोक्षयेत् ततः विष्णुसेनं प्रार्थयेत् विश्वक्सेन भगवान को प्रार्थना कर लीजिए। सभी प्रोग्राम रहता ना घर में कुछ कोई विघ्न बिना विघ्न करके पूरा दिग्विजय होना, ऐसा मन में प्रार्थना कीजिए स्वामी विश्वक्सेन भगवान को। ओम श्रीवान सूत्रवदीनानो भद्राष्टमवदे ग्रहान् सन्नवशान प्रभाग समप्रभः एतवादुषे कवश्वरक्षात्रायणः भक्ताग्रायुक्तं श्री आज्ञामासुचक्रादिः विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रधारणम् आसीनं दक्षिणे हस्तं विश्वक्सेनं नमस्ते। ओम सबुदेनान्यवे भगवते तस्मिन् तत्पुरुषाय मनेवे शास्त्राय तन्नशास्त्र प्रचोदयात्। ओम भूः विश्वक्सेन वाहयामि ओम वायुष्पक्सेन वाहयामि ओम वायुष्पक्सेन वाहयामि ओम भूर्भुवः
कारयामि पूजयामि परिवाराय श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः प्रतिमा स्थापना स्वाहा शिखाय कवचाय नेत्राभ्यां सहस्राय विश्वक्सेनाय नमः अर्घ्यं समर्पयामि परिवाराय श्रीमते विश्वक्सेनाय समर्पयामि श्रीमते विश्वक्सेनाय आचार्यं समर्पयामि श्रीमते विश्वक्सेनाय समर्पयामि श्रीमते विश्वक्सेनाय अनन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि श्रीमते विश्वक्सेनाय वेदान्तयक्षणां समर्पयामि श्रीमते विश्वक्सेनाय यक्षणां समर्पयामि श्रीमते विश्वक्सेनाय श्री चन्दनं समर्पयामि हरिद्राचूर्णं समर्पयामि द्रव्याणि समर्पयामि अनपुष्पै पूजयामि ओम विश्वक्सेनाय नमः ओम श्रीमते नमः ओम सुप्रवत्यासवेदाय नमः ओम सेनेशाय नमः ओम सर्वपालकाय नमः ओम शोभनांगाय नमः ओम परिकुण्डलधराय नमः ओम वृत्तकाञ्चनभूषणाय नमः ओम परिवक्त्राय नमः ओम हरिप्रियाय नमः ओम सर्वशास्त्रासज्ञाय नमः ओम सर्वाभीष्टवरप्रदाय नमः ओम सपरिवाराय श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः नानाविध परिमल पत्र पुष्पाणि समर्पयामि धूमाग्रापयामि ओम पूर्णाद्रोहदरिद्रोह्यामि ईश्वरहृदय आनन्दि मंगलसुखदाय आवाहित श्री विश्वक्सेन सुप्रीत सुप्रसन्नो वरदो भवतु उत्तरे शुभकर्मण्य विघ्नोऽस्तु भवन्तु महान्तो नृण्हन्तु उत्तरे शुभकर्मण्य विघ्नमस्तु विश्वक्सेन विधास्थानं प्रतिष्ठापयामि ओम यज्ञेन यज्ञमयन्तदेवाः तानि प्रदमान्यासन्न ते अनागं महिमानस्तुते त्रमूर्वे साध्या सन्ति देवाः शोभनार्थे क्षेमाय पुनरागमनाय च विश्वक्सेन प्रसादं यजमानस्य शिरसि निक्षिपेत् ओम शतमानं भवति सदायुग्मजस्यतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति यजमानस्य विश्वक्सेनानुग्रह प्रसाद सिद्धिरस्तु तदास्तु यजमानस्य विश्वक्सेनानुग्रह प्रसाद फल सिद्धिरस्तु तदास्तु सर्वकार्य सत्या एतास्तु यजमानस्य कामाः रोचनो रोचमानः शोभनः शोभमानः कल्याणः ततः पुण्याः वाचनं कृत्वा
ओम चरणं पवित्रमिति महीं प्रक्षाल्य चरणं पवित्रं विदधं पुराणं येन भूतस्तरदुष्टुतानि तेन पवित्रेण शुद्धेन भूतानि गन्धद्वारामिति गोमयेनानुलिप्य ओम गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषणीं धनुर्धरायेति भूमिं सम्प्रार्थ्य ओम धनुर्धराये विद्महे सर्वसिद्धिं धीमहि तन्नो धरा प्रचोदयात् आपवन्दन्ति पञ्चचूर्णैरलङ्कृत्य अपवन्दन्तु देवसे दीर्घायुत्वाय वर्तते वासवासा इति वस्त्रं निधाय ग्रीष्मो हेमन्त इति धान्यं निक्षिप्य वर्षास्तु विदल्लो हस्तो मृदूनागं शतशारदानान्यवादयेषामयेस्यामाधारमिति मध्ये अष्टदलपद्मं विलिख्य रवीन्द्रमपिता रवीन्द्रगं हवे हवे सुरगं शूरवीन्द्रं कुबेर चक्रं पुरोह रवीन्द्रत्व स्वस्ति नो भगवानाग्निन्द्रः मंत्रेण प्रागुदग्रान् दर्भानास्तीर्या धन्वनाजञ्जयेम धन्वनादीव्राः समदो जयेम धनुश्चत्रो रवगामो धन्वनाः सर्वाः प्रविशोचेम आगलसे स्मितमन्त्रेण सूत्रवेष्टितं सलक्षणं कलशं निक्षिप्य ॐ आगलसे सुधापति पवित्रे परियुज्यते नैरेत्ये सुवर्धते गन्धोदकमापूर्य ॐ सन्नो देवैरभिष्टाय आपो भवन्तु विषये आपो वाइत्यभिमुद्रया वो आपो वायुं सर्वं विश्वाभूतान्यापः प्राणावापपचभावो सम्प्राणापो विराडापस्वराडापश्चन्दापस्यापो ज्योतिस्यापो रजोस्यापः सत्यमापस्सर्वादेवतापो देवस्यद्वेदमन्त्रेण पूर्वाक्रं कूर्चं निक्षिप्य ॐ देवस्य त्वासविलप्रजवे अस्मिनो बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यामादे नमो यज्ञेस्तु सुतवल्लवा निक्षिप्य ॐ नमो यज्ञेषु देवयन्तोऽर्चन्त्यावा नमो अभिद्वेषत्यै एषा ब्रह्माण्यरामानि विपानिष्पत्क्रियन्तगणोमशाखाः याः फलनिरिति नारिकेलफलं निक्षिप्य याः फलनेत्या फला पुष्पायाश्च पुष्पैः बृहस्पतिसूरास्तानां चन्द्रमसः तस्मिन् ॐ मधुरुग्रहकाम्यया उद्यवतावतारयः विपदमन्त्रसिद्धिदा श्रीराम नमो नमः ॐ ब्रह्मसहस्रारं पठ भगवन् सुदर्शन आगच्छ स्वाहा सपरिवाराय श्रीमते सुदर्शनाय नमः प्रणामा स्वागता प्रतिमा स्थापना अभिरुद्रामदर्श्य हृदयाय नमः शिरसे स्वाहा शिखाय कृष्ण कवचाय नेत्राभ्यामोषण अस्ताय वटन ततः पद्माचन्द्राचन्द्रागधवानमानुक्ताकुदरस्याभिषेकं छत्रमुद्रां प्रदर्शयेत् सपरिवाराय श्रीमते सुदर्शनाय नमः अर्घ्यादिपचारैरभ्यर्चयेत् अर्घ्यं समर्पयामि पाद्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि स्नानं समर्पयामि शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि स्मरणीयं समर्पयामि यज्ञोपवीतं समर्पयामि प्रियश्रीचन्दनं समर्पयामि हरिद्राचूर्णं समर्पयामि विलेपनं समर्पयामि अलपुष्पैः पूजयामि ॐ आचक्राय नमः ओम सुदर्शनाय नमः ऐसा बोलकर कलश के ओम आचक्राय नमः ओम विचक्राय नमः ओम सुचक्राय नमः ओम सूर्यचक्राय नमः ओम ज्वालाचक्राय नमः ओम महासुदर्शन चक्राय नमः ओम त्रैलोक्यमोहन चक्राय नमः
समर्पयामि धूपं पूजया आवाहित श्रे सुदर्शन सुप्रियता दर्भाः स्वस्ति दर्भाः पार्वती प्रतिवचनं स्वस्ति दर्भाः पादो पवित्रमस्तु बहुलेयं चास्तु स्वामिनः स्वामिनः मनस्समाधीयतां समाहितमनस्मः प्रसीदन्तु भवन्तः प्रसन्नाः स्मः भवद्भिर्जातः पुण्याहं वाचि